Greetings of the day to everyone. Today, in this video of class 6th, chapter 2, components of food, video 5, what we are going to discuss, we will discuss about deficiency diseases mainly. So, what do we mean by deficiency diseases? See, all of us know that we need a balanced diet for our proper growth and our development. Okay, and if any of the nutrients will be less in the required amount than the required amount which is needed by us, what will happen? It may cause a disease. Okay, जितना न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, अगर उससे कम होगा या फिर लंबे टाइम तक हम उस न्यूट्रिएंट को नहीं लेंगे, then it may lead to disease. Okay, so diseases that are caused due to lack of some nutrient, that is called deficiency disease. When a particular nutrient is missing from the diet of a person over a long period of time or present in amount less than the required, then it may cause deficiency diseases. Okay, so diseases are caused due to lack of carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. All right, now deficiency diseases are mainly of four types: protein deficiency disease, protein, carbohydrate and fats deficiency diseases, vitamin deficiency diseases, and lastly mineral deficiency diseases. So first we will discuss about protein deficiency disease. So if a child does not get enough protein in his or her diet for a long time, then he or she is likely to suffer from severe malnutrition. अगर कोई भी बच्चा लंबे टाइम तक प्रोटीन्स नहीं ले रहा है अपनी डाइट में, तो फिर क्या होगा? malnutrition. Okay, that means nutrition की कमी. And if I talk about the main disease caused by this deficiency of protein is kwashiorkor. What is kwashiorkor? This is the disease which occurs in the children of 1 to 5 year of age. Okay, it's a very common protein deficiency disease. And what are the symptoms of these disease? Are you able to see in this picture? This boy is having the pot-like belly, the swollen belly. Why it is like so? Just due to retention of water. पानी भरने की वजह से बॉडी स्वेलअप हो जाती है. ओके, ओडीमा ऑल्सो इट मे बी कॉल्ड. इसके अलावा जो लिम्स होते हैं, स्पेशली लेग्स, वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, बोनी हो जाती हैं. राइट, पॉट लाइक बेली, बल्जिंग आईज, आँखें ऐसे लगता है बाहर की तरफ आ रही हैं. ओके, स्टंटेड ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या फिर बहुत स्लो होती है. स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, हेयर बिकम्स रेडिश एंड गिरने लग जाते हैं बाल, बिगिन टू फॉल. ओके, सो all these are the common symptoms of kwashiorkor. I repeat myself, what are the symptoms? Stunted growth, dry and scaly skin, reddish hair which begin to fall, swell up body due to retention of water, limbs especially legs become thin and bony, large pot-like belly, bulging eyes. Okay, these are the common symptoms of protein deficiency diseases. All right, now let's discuss the next, that is protein, carbohydrate and fat deficiency diseases. Okay, see in this picture, this boy is suffering from that disease, the deficiency of protein, carbohydrate and fat in the diet of a children leads to a disease which is known as marasmus. What is the name for that disease? That is marasmus. Okay, so what are the common symptoms of this
type of disease and how it occurs. So let's get to know about this. What are the disease generally affect infants under 1 year of age. All right. So the symptoms are body becomes very thin, very lean, so weak that the child may not be able to move. इतना पतला हो जाता है बच्चा, इतना थिन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है that he or she may not be able to move even. हिल भी नहीं पाता, मूवमेंट भी नहीं कर पाता. स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है. आर यू एबल टू सी द रिंकल्ड स्किन इन दिस पिक्चर? You might be able to see the ribs also over here in this picture, right? The ribs are clearly visible. Ribs बहुत ज़्यादा prominent हो जाते हैं. Sunken eyes, एकदम अंदर की तरफ धसी हुई आँखें. Unable to digest and absorb food and may suffer from diarrhea. हो सकता है उसको डायरिया की प्रॉब्लम भी हो. डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, बॉडी फूड एब्जॉर्ब नहीं करती. Okay, so what this disease is called? Marasmus. Okay, grossly underweight. Child becomes grossly underweight. Ribs showing through the skin. बाहर की तरफ दिखती हैं ribs. All right. So these are the all features of marasmus. All right. So 2 deficiency diseases we have already discussed. Now let's discuss about the third one, that is vitamin deficiency diseases. So the diseases which are caused by the deficiency of certain vitamins are here in this table. Okay, vitamin A, vitamin B1, B2, B12, C, D, etc. So let's discuss them. Vitamin A, it causes night blindness. Okay, night blindness means रात के टाइम नहीं दिखता है, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. ओके, विटामिन B1, बेरी. व्हाट इज दिस बेरी डिजीज? एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. दैट मीन्स डाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है, वेट कम हो जाता है, लॉस ऑफ वेट ऑल्सो अकर्स. ऑल राइट. विटामिन B2, स्किन डिसऑर्डर्स. दैट मीन्स इरिटेशन होता है आइज में, बिल्कुल ड्राई सी स्किन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है टंग के अंदर. विटामिन B12, इट कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया. दैट मीन्स पेल स्किन हो जाती है, एकदम पीली पड़ जाती है स्किन. रेड ब्लड सेल्स, RBC सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. जब RBC कम होंगे तो क्या होगा? हमारा स्टेमिना भी कम हो जाएगा. ओके, एपेटाइट, या दैट मीन्स द डाइजेशन विल ऑल्सो बिकम पुअर एंड वील फील फ्रीक्वेंट हेडेक. जल्दी जल्दी सर में दर्द होने लगेगा. ओके, सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स फॉर द डिजीज. Yes, vitamin B12. Now let's discuss about vitamin C, scurvy, as we are aware. Okay, so what are the symptoms for this? Softened and bent bones. Soft bones are more susceptible to fracture. क्योंकि सॉफ्ट हो जाती हैं इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, तो क्या होगा? जब बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर वो इजीली टूट जाएंगी. Okay, if you will fall down anywhere, you may get the fracture very simply, very comfortably. Soft bones are more susceptible to fracture. Okay, and bowed legs due to malformation of leg bones. पेन हो जाता है बोन्स के अंदर. लेग्स जो हैं वो ऐसे झुकी सी बो हो जाती हैं, है ना, ऐसे मुड़ सी जाती हैं. लेग बोन्स में भी malformation हो जाता है. ऑलराइट, सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स फॉर विटामिन डी. नाउ विटामिन के. द डेफिशिएंसी डिजीज caused by vitamin K is hemorrhage. Okay, and what are the symptoms of hemorrhage? Excessive bleedings from wound. यानी if you fall down somewhere, what happens? In a few seconds or few minutes, the blood will stop. It will stop bleeding from there. But if one is suffering from this disease, if one is having
deficiency of vitamin K in their body, then the blood will not stop. बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी अगर कहीं पर थोड़ी भी चोट लग गई तो. ओके, दैट इज़ कॉल्ड हेमरेज. ऑलराइट, so these are all the diseases related to vitamins. Okay, so now we get to know that we need carbohydrate, proteins, fat, vitamins, all these nutrients into our diet. Okay, and along with these, minerals are also an important part of our diet. If we will not take them in proper amount, then they may also lead to the diseases. Okay, so now we are going to discuss the diseases which are caused by deficiency of certain minerals. So let's discuss mainly about iron, iodine and calcium, because these three are the minerals which are required mainly by our body. Okay, so if I talk about iron, iron causes anemia in our body. What I mean by this word anemia, that less hemoglobin produced in our body. कम hemoglobin बनता है हमारी body में. Okay, RBC cells में कम hemoglobin बनता है. And what is the function of hemoglobin? They carry oxygen from our lungs and take it to all the parts of our body in the form of oxyhemoglobin. Okay, it forms oxyhemoglobin and takes that oxygen to different parts of our body. So what are the symptoms of this? Weakness, fatigue, थकान सी लगती है, बहुत वीकनेस फील होती है, लॉस ऑफ वेट, वज़न कम हो जाता है, पेल स्किन, पीली पड़ जाती है स्किन, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो गेट्स पुअर. ओके, हम प्रॉपर खाना पचा नहीं पाते. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द deficiency disease caused by iron. Now let's discuss about iodine. The deficiency disease caused by iodine is the goiter. Are you able to see in this picture? Right? This is the neck region of a woman. It got swollen. So what are the symptoms? Abnormal enlargement of the thyroid gland, and where this thyroid gland is present? In the neck region. Okay, and retarded growth retard हो जाती है. mental disability. Okay, mentally भी disable हो जाते हैं up to few extent. Okay, now come to the calcium next. Calcium, all of us knows that calcium is important for the proper growth of our bones and our teeth etc. So इसकी deficiency से क्या होगा? Obviously it will affect the bone and the tooth. So bone and tooth decay. Okay, so bones will become weaker and excessive bleedings will occur from gums. Stunted growth, बहुत कम ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगी. टूथ डिके होगा एंड वीकनेस इन बॉडी यू विल फील. ओके, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस दैट कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन. व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर रिकेट्स? रिकेट्स में बोन्स वीक हो जाती हैं, बहुत पुअर डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, नॉट ओनली फिजिकली मेंटली ऑल्सो. ओके, सो growth retarded physically as well as mentally. सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है. ओके, बॉडी और मसल्स में वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है इसकी कमी से. राइट, तो सिम्टम्स क्या है? मसल्स वीक हो जाती हैं एंड टायर्डनेस फील होने लगती है. नाउ कम टू फ्लोरीन. What are the deficiency diseases caused by fluorine? Dental caries. That means pain होने लगता है teeth के अंदर. Sensitivity to hot and cold food. If you eat very cold food or very hot food, आपके teeth जो हैं उस चीज़ों के लिए sensitive हो जाएंगे. Okay? Alright, this is caused by fluorine only. Okay? So all these minerals are important for us. All of them are having their own function to do in our body. Okay,
सो राइस जो हम डेली डाइट में किड्स खाते हैं ना, वो पॉलिश्ड राइस होते हैं. ओके, it is called processed food. So during processing of food, many vitamin like vitamin B1 get removed, and lack of vitamin B1 causes beriberi. So we should eat food that are not processed. ओके, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. जो पैक होता है ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड, वी शुड नॉट ईट दैट. वाई? बिकॉज it may cause it may remove some important vitamins from our food. All right. Okay, now let's discuss about our next topic. See, are you able to see in this picture the tooth decay, the goiter, the weak bones, the anemia? All right, minerals से जो होने वाली diseases है, these are all that. Okay, this is the goiter. All right, a deficiency disease caused by the deficiency of iodine. आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नॉर्मली हमारे फूड में जो सॉल्ट हम लेते हैं उससे, या फिर सी फूड वगैरह से. ओके, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू. बेरी, स्किन डिसऑर्डर्स, नाइट ब्लाइंडनेस, pernicious anemia. Okay, so all these are the pictures related to the different deficiency diseases of vitamins. Okay, all right, so now our next topic is excessive intake of food. सी, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर आप कोई न्यूट्रिएंट कम खाओगे तो उसकी वजह से डिजीज़ हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप ज़्यादा भी खाओगे ना, देन टू इट मे लीड टू डिजीजेस. सो दैट्स वाई आई आस्क्ड यू टू टेक अ बैलेंस डाइट. ओके, दैट्स वाई वी आर बीइंग प्रेफर्ड टू टेक बैलेंस डाइट. ऑलराइट, ना तो ज़्यादा लेना है ना कम लेना है. अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे फैट रिच फूड की, देन व्हाट विल हैपन? एनर्जी जितनी आपकी बॉडी यूज़ करेगी ठीक है, अदरवाइज जो एक्सेस फैट होगा वो कहाँ जाएगा? वो ओवर वेट करेगा. ओके, ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड leads to overweight condition that is called obesity. All right, so many people, especially children, eat a lot of junk food, burgers, chips, soft drink, and all these food items contain large amount of fat and sugars. And due to this what happen, all these food item contains बहुत ज़्यादा इसमें फैट और शुगर होता है. एंड क्योंकि आजकल बच्चे आप लोग इतना खेलते नहीं हो, राइट? यू आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, राइट? सो व्हाट हैपन, फैट गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी. वो फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड दैट कॉजेज ओबेसिटी. Okay, so obesity is not good for us. Why? Because it may lead to many diseases. Even you can say that obese people may suffer from even cardiovascular diseases also, है ना? हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हाइपरटेंशन एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस, बहुत सारी डिजीज. So we should always eat healthy food, healthy diet, which includes the grains, the vegetables, and fruits, juices, curd, milk, and all milk products, etc. Okay, I hope this chapter must be clear to you all. So just look at all the videos, just listen to them carefully, and take a very good care of yourself and stay safe at home. Thank you so much.